Hello guys, I'm Himanshu and I make videos on study from HI Study channel. So here we are going to learn today past perfect continuous tense. So past perfect continuous tense is identities से रहा था, से रही थी and से रहे थे in Hindi. End of the sentences in Hindi, end of the words, any lines. So the we get that there से रहा था. It's like we can say that वह 2 दिन से घूम रहा था, वह 2 दिन से घूम रहा था. सो एट द एंड आ गया से रहा था. तो यही पहचान है क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स सॉरी रूल्स की. सो द रूल्स क्या है हमारे. सबसे पहला रूल्स जो है सब्जेक्ट्स प्लस हैड बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस सिंस फोर एंड प्लस टाइम. क्या क्या है हमारे सब्जेक्ट्स रूल्स. हमारे फर्स्ट रूल्स हैं सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम. देन नेगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम सिंस फोर प्लस टाइम. The third one is had plus subject plus been plus we first plus ing plus object plus since for plus time. And then last one is WH family with had plus since had plus subject plus been plus we first plus ing plus object plus since for and time with question mark in written. I'm saying always whenever you write on the notebook or on the paper, so always in the interrogative and double interrogative questions put their question mark sign. It will give you the correct point. So here sentences some sentences. In the sentences, the first one is I had been calling her for 2 days. I had been calling her for 2 days. I had not been calling her for 2 days. I had not been calling her for 2 days. Had I been calling her for 2 days? Had I been calling her for 2 days? Why had I been calling her for 2 days? Why had I been calling her for 2 days? So in the easy way we understood कि सेंटेंसेस की हिंदी में मान्य होता है कि हिंदी में इसकी मीनिंग है मैं उसे 2 दिन से बुला रहा था. मैं उसे 2 दिन से बुला रहा था. क्या मैं उसे 2 दिन से बुला रहा था. कोई भी पर्सन ही या सी है बट वैसे यूज मैंने यहाँ सी किया है. ही या सी कोई भी हो सकता है उस जगह पर. ओके एनी पर्सन नेम यू कैन ऐड देयर. द next one is you had been reading books since morning. You had been reading book since morning. You had not been reading books since morning. You had not been reading books since morning. कि आप सुबह से किताब पढ़ रहे थे. आप सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे थे. The next one is had you been reading books since morning. Had you been reading book since morning. And the last one is why had you been reading books since morning. Why had you been reading book since morning. कि आप बुक्स को क्यों पढ़ रहे थे. देन क्वेश्चंस कि आप इतने टाइम से क्यों पढ़ रहे थे. नाउ द थर्ड वन इज they had been doing their job since 2000 since 10 years. They had been doing their job since 10 years. So in the negative they had not been doing their job since 10 years. Had they been doing their job since 10 years. Where had they been doing their job since 10 years. कि वह 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे थे. वह 10 साल से काम कर रहे थे. वह 10 साल से वह सभी यहाँ पे 10 साल से काम नहीं कर रहे थे. क्या वे 10 साल से काम कर रहे थे. क्या वे 10 साल से काम कर रहे थे. वे 10 साल से कहाँ काम कर रहे थे. एंड एट द एंड he had been dancing. He had been dancing for an hour. जब भी शॉर्ट पीरियड की बात होती है कोई फिक्स टाइम नहीं होता वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फोर. और जब पॉइंट करते हैं ना टाइम जैसे 10 ईयर है 5 ईयर है मंडे है ट्यूसडे है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस. क्या यूज़ करते हैं हम
हम यूज़ करते हैं सिंस को। सो नाउ लुक द सेंटेंस, ही हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, he had not been dancing for an hour, he had not been dancing for an hour, had he been dancing, had he been dancing an hour, had he been dancing an hour, what had he been dancing an hour, वह क्यों नाच रहा था, वह क्या वह नाच रहा था, क्या वह पिछले 1 घंटे से नाच रहा था। सो इन दिस वे, इजी वे, इसी तरह से बहुत ही आसानी तरीके से आप सीख गए हैं। यहाँ पर अब तक हमने सीख लिया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। सो इस चीज़ को, सिंस और फोर्स को और बेटर से समझने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वीडियो अगर आप वहाँ पे जाकर देख लेते हैं, आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हाँ उसे किस चीज़ से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट में, नॉट शॉर्ट बट इतना एक्सप्लेन किया गया है कि वो बहुत है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उस चीज़ को वहाँ पर। एंड इसीलिए दैट फिनिश, कि आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।